Students, I am Madhuri from Yash classes. Today we are going to see question 4th of exercise 1.1 of the chapter real numbers. So what is that question? C. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. So m will be any integer, and we have to prove that square of any positive integer. Square of any positive integer. What are positive integers? That is all natural numbers like 1, 2, 3. और हमें क्या प्रूव करना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर आएगा, that square will be in the form of a 3m or 3m plus 1. So here we are going to consider x as any positive integer, and we have to divide as we have to prove that its square will be in the form of a 3m. So we will divide b is equal to 3 in the Euclid's algorithm. So we have to divide that x by b means 3. So here the quotient will be q and the remainder will be r. तो हम वो यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, and as we know the value of remainder must be 0 or greater than 0 and its value will be less than the divisor, and यहाँ पे हमने divisor 3 लिया है. So value of r is greater than or equal to 0 and that is less than 3. Or now we will so what will be the values of r? We will see now. See, that is 0, 1 and 2. Less than 3 means up to 2 the values of r will be. And now we can write that algorithm in the by putting the values of r like this. See, x is equal to 3q plus first value of r क्या है तो 0. Second value will be x will be 3q plus remainder 1, and the third, that is x is equal to 3q plus 2. लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ये पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के बारे में पूछा है, तो हम ये नंबर्स के स्क्वायर लेंगे. वी विल टेक द स्क्वायर्स ऑफ दीज 3 टर्म्स. ओके, see how we are going to take the zeros now. फर्स्ट जो टर्म हमने देखी जब हमने r की वैल्यू 0 ली थी, तो x square will be, the term was 3q, so I will take the square of 3q like this. So 3 square is equal to 9q square. सेकंड टर्म और x स्क्वेयर इज इक्वल टू सेकंड जब r की वैल्यू 1 थी, 3q plus 1 whole square. Now we have to expand that 3q plus 1 using the identity a plus b whole square. तो यहाँ पे कैसा आएगा वो a square यानी 3q square, that is 9q square plus 2ab means 2 multiply by 3q multiply by 1 यानी यहाँ पे 6q आएगा and 1 square, that is 1. So how I can write this term like this? See, I will take 3 common from these two terms. So it will be 3 into bracket 3q square plus 3 2s are 6 means यहाँ पे 2q, and 1 will be as it is, I will keep. And after that x, when r's value is 2, x square is equal to 3q plus 2 whole square. इसे भी हम a plus b whole square के
स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे तो ये कैसा आएगा 9q square plus 12q plus 4 will be there, and I can write that term like this 9q square plus 12q प्लस ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, that is 3 plus 1, and now I will take 3 common from these 3 terms. So ये कैसा आएगा 3 into bracket 3q square plus 3 4s are 12, so यहाँ पे 4q plus 3 1s are 3, यानी यहाँ पे 1 and here also 1. Now see first term, that is ये 9q square जो आया है इसे भी मैं कैसे लिख सकती हूँ 3 multiply by 3q square, and this 3q square is any integer. So I, instead of that 3q square I will take m as any integer, and यहाँ पे भी अगर मैंने देखा तो 3q square plus 2q इसकी भी वैल्यू एनी इंटीजर आएगी, तो इंस्टेड ऑफ दैट 3q square plus 2q I will take m here, and here also instead of 3q square plus 4q plus 1 I am going to take one integer, and that integer is m. यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी I have taken m, and here also m. So this term will become 3q square के प्लेस पे हम m लिख रहे हैं तो 3m, and the second term यहाँ पे भी अगर मैंने m लिखा तो ये भी 3m plus 1, and यहाँ लास्ट टर्म में भी इंस्टेड ऑफ दैट 3q square plus 4q plus 1 as its value will be integer I am going to take m there, so इस टर्म को भी हम 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो what we have proved that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. ओके तो यहाँ पे हमने 4th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट वी विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू रेफर दिस कंप्लीट चैप्टर, तो इस कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. प्लीज़ रेफर टू दैट.